mengganggu orang lain. लिहाजा जब साहब वालों से कहा गया था कि पहले से अगर आगे बैठे, इन्हें पहले से आगे बैठना चाहिए ताकि किसी मुसलमान को हटाना बिठाना ये तकलीफ नहीं पड़े। Maka petugas Kanzari dan penyertanya yang sudah ditentukan dan mereka tahu mesti duduk di depan agar tidak mengganggu yang lainnya, datangnya juga duluan sehingga tidak mengganggu yang sudah datang, disingkir-singkirkan begitu. और हम जिम्मेदारों को इसका बहुत एहतराम करना चाहिए। Dan para prawijah hendaknya betul-betul dengan perhatian. ऐसे नमाज में Sebagaimana dalam sholat juga, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है कि मस्जिद में हम जिम्मेदारों के लिए अगली सफर खाली करवाएं दो। jadi kurang munasib sebenarnya untuk para prawijah dikosongkan aja biar datangnya belakangan nggak apa-apa. बल्कि हमें पहले से आगे बैठ जाना चाहिए। Maka hendaknya prawijah datangnya duluan datangnya. या फिर जो तुम्हारा ये है, तुम्हारे जो साथी हैं इस्तेगफार वाले, उन्हें सब कह दो कि हम आ जाएं, बैठ जाएंगे, वरना हमारे लिए किसी को उठाकर खाली न करो। Maka Istiqbal beritahu kepada para prawijah, hendaknya datangnya duluan. Kalau tidak ya sudah, yang datang kita nggak bisa nyuruh mikir. मस्जिद तो अल्लाह का घर है। Sebab kalau namanya masjid itu rumah Allah. जो पहले आए वो बैठेगा। Yang datang duluan ya dulunya di depan. इसी तरह यहाँ इज्तिमा में जब हमें पहले से कहा गया कि भाई कारगुजारी पर बयान करने वाले आगे आकर बैठ जाओ, उन्हें पहले से फिक्र करके आगे बैठ जाना चाहिए। Maka dengan pula dalam majlis seperti ini, dalam majma ini, apabila sudah diberitahukan sebelumnya bahwa prawijah yang akan कारगुजारी nanti diminta duduknya di depan, maka supaya betul-betul di depan tanpa mengganggu yang lainnya, datangnya duluan. हमारी ये मेहनत तो सुन्नत वाली जिंदगी जिंदा करने की मेहनत है। Usaha kita ini adalah untuk menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan sunnah. हर अमल में हम देखेंगे अल्लाह के नबी का मामूल क्या था। Dalam setiap amal kita lihat apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. सहाबा का मामूल क्या था। Bagaimana contoh sahabat radhiyallahu ajma'in. आपको सहाबा की जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा हटो बचो हटो बचो। Dalam kehidupan sahabat radhiyallahu ajma'in, kita tidak akan pernah temui bahwa tatkala ada yang datang mikir-mikir sana, nggak ada begitu. लिहाजा इस चीज को अपनी जिंदगी में हमेशा जिंदा करने की कोशिश करो। Makanya kita selalu usahakan supaya ini semua hidup dalam kehidupan kita. अभी एक अमल हो रहा है, इस अमल की अहमियत हमें समझनी चाहिए। Hendaknya kita pahami betul, kita akan buat satu amal sekarang ini, kita pahami betul ये kepentingan. कारगुजारी का अमल जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कारगुजारी adalah satu amal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब साहब अल्लाह के रास्ते की मेहनत के लौटते थे तो आपके सामने तमाम हालात बयान किए जाते थे। Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berangkatkan satu jemaah, maka diterangkan dulu bagaimana keadaannya di sana. हालात पूछे जाते थे Dan beliau tanya juga bagaimana keadaannya. और उसमें कोई चीज इस्लाह की होती थी, अल्लाह के कहने से उसकी इस्लाह फरमा देते थे। Dan apabila dari laporan mereka ada yang perlu diperbaiki, maka beliau perbaiki. एक मर्तबा सहाबा किसी जगह गए, वहां के लोगों को दावत नहीं दी और पकड़कर ले आए। Suatu ketika seorang sahabat dikirim, kemudian mereka di sana tidak berdakwah, orang-orang langsung dibawa, ditangkap, dibawa. उस जमाने के गैर मुस्लिम भी समझते थे कि मुसलमान जब आएगा हमारे पास तो पहले दावत देगा और दावत देने के बाद अगर हम कबूल नहीं करेंगे तो हमें कैद करेगा। Orang-orang kafir seperti itu memahami bahwa bila ada orang muslim yang datang, maka mereka awal-awal selalu berdakwah supaya kami menerima dakwah mereka. Apabila tidak, baru kami akan ditangkap. इन आने वाले कैदियों ने हुजूर से कहा, हुजूर इन लोगों ने हमें दावत नहीं दी है, बगैर दावत दिए हमें रात ही रात पकड़ के ले आए हैं। Maka tatkala tawaran dibawa ke Madinah, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, kami ini ditangkap tanpa didakwahi dulu. Tahu-tahu malam-malam datang kami ditangkap dibawa ke sini. अल्लाह के प्यारे नबी ने साहबा से कहा, जाओ ले जाओ, उनकी जगह पर पहुंचाओ इन्हें, 3 दिन इन्हें दावत दो, इसके बाद अगर कबूल न करे तो फिर आगे इंतजाम करो। Maka begitu mendengar laporan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para sahabat, pulangkan lagi orang-orang ini, sampaikan ke tempat tinggalnya. Lalu kalian di sana 3 hari dakwah, bila tidak menerima baru ada lanjutannya nanti. हाँ, तो ये मेरे दोस्तों कारगुजारी है। एक जमात के साथियों ने कहा, हुजूर ये हमारे अमीर साहब ने तो हमें आग में कूद जाने का हुक्म दिया, हम नहीं कूदे। Karena salah satu rombongan sahabat
dikirim oleh Rasulullah SAW. Setelah pulang, salah seorang dari mereka sampaikan, ya Rasulullah, amir kami menyuruh kami untuk terjun ke gubaran api, tapi kami tidak mau. हुजूर ने फरमाया बहुत अच्छा किया नहीं कूदे, Oh, untung kamu nggak mau. अगर तुम कूद जाते तो जहन्नम में जाते। Seandainya kamu mau, kamu masuk dalam api langsung ke jahanam. इससे पता ये चला कि अमीर की इताअत गुनाह के कामों में नहीं की जाएगी। Maka dari sini diketahui apabila perintah amir ini adalah dosa, maka tidak perlu ditaati. समझ में आ रही नहीं आ रही? Bisa dipahami teman-teman? तो कारगुजारी सुनी जाती इसलिए कि ठीक हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो उससे उसके बारे में आपको कुछ रहबरी दी जाएगी, उसे ध्यान से सुने और उसे करने की नीयत से सुने और जैसे बताया जाए ऐसे करें, इंशाअल्लाह का मेहनत में बहुत फायदा होगा। Maka dalam कारguzari ini, kalau ada hal-hal yang baik, alhamdulillah kita syukuri. Bila kurang tepat, kemudian diberikan arahan-arahan, kita ikuti. Apabila kita ikuti, insya Allah kerja kita akan makin meningkat. ये दावत की जो मेहनत है, इसके दो फायदे हैं। एक तो मेहनत करने वाले की अपनी तरबियत, ईमान में तरक्की, अल्लाह से ताल्लुक में तरक्की, जिंदगी में दीन के दिन ब दिन आने का रास्ता है। और दूसरी सी नफा यह है कि जिनमें हम मेहनत करेंगे अल्लाह उन्हें भी हिदायत की राह पर डालेगा। Sebab dalam usaha dakwah ini ada dua sisi hasilnya. Pertama adalah bagi dai sendiri, dia akan melakukan tarbiyah sehingga makin hari makin dekat hubungannya dengan Allah Ta'ala, makin kuat ta'alluqnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makin baik dirinya. Dan yang kedua, orang lain akan Allah Ta'ala berikan hidayah. और ये मेहनत तो हमारे बड़े फरमाते कार्य नबूवत है। Para pensyarah kita katakan bahwa usaha ini adalah kerja anbiya. तो नबी वाली मेहनत है, उसे तो बहुत ही आदमी को फिक्र से और बहुत ही एहतियात से और मेहनत के साथ जैसे बताया जा रहा है ऐसे करेंगे, इंशाअल्लाह ये मेहनत से हमारे लिए और पूरी इंसानियत के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर के राह खोलेगा। Maka karena ini adalah kerja nubuah, kerja kenabian para anbiya alaihi salatu wassalam, hendaknya dengan penuh pikiran, dengan penuh kehati-hatian dan dilaksanakan dengan cara yang setepat mungkin. Sehingga bila ini dilaksanakan dengan tepat, maka akan membawa banyak kebaikan bagi diri kita dan bagi seluruh umat. इसलिए फरमाया अगर इस मेहनत को सही मेहनत से करोगे जैसा इसका हक है, तो साल में आने वाली रहमतें महीनों में आ जाएंगी और महीनों में आने वाली रहमतें हफ्तों में आ जाएंगी और हफ्तों में आने वाली दिनों में आ जाएंगी। Sehingga dikatakan apabila usaha ini dibuat dengan tepat, dengan cara yang benar, maka rahmat yang datang dalam ukuran tahunan Allah Ta'ala datangkan dalam beberapa bulan saja. Dan rahmat yang datangnya dalam bulanan Allah Ta'ala datangkan dalam beberapa minggu saja. Dan rahmat yang diusahakan datang dalam mingguan Allah Ta'ala dalam beberapa hari saja akan datangkan. और अगर अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे, अगर इसको अपनी मेहनत से सही तरीके से नहीं की गई तो जो फितने सालों में आएंगे, महीनों में आएंगे और महीनों में आने वाले फितने हफ्तों में आ जाएंगे और हफ्तों में आने वाले फितने दिनों में आ जाएंगे। Tapi sebaliknya, naudzubillah, seandainya dakwahnya tidak dikerjakan dengan cara yang benar, maka fitnah-fitnah yang mestinya beberapa bulan lagi akan datang, akan segera datang dalam ukuran minggu saja. Dan fitnah yang mestinya beberapa tahun lagi datang, akan datang dalam beberapa bulan saja. Dan fitnah yang mestinya dalam beberapa bulan lagi datang, dalam beberapa minggu lagi datang, akan datang hanya ukuran berapa hari saja. लिहाजा कारगुजारी खूब फिक्र के साथ और सही और जैसा हो रहा है ऐसी कारगुजारी और तहकीक के साथ कारगुजारी रहनी चाहिए। Maka कारगुजारी dengan penuh fikir, ketawajuhan dan betul-betul dengan kejujuran apa yang dilakukan itu saja yang disampaikan. अंदाजे के एतबार अंदाजे से कारगुजारी नहीं रहनी चाहिए। Jadi jangan kira-kira, बल्कि जितना काम हो रहा है उसका तहकीक करके पूरी तहकीक के साथ कारगुजारी लाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे सामने अपनी मेहनत क्या हो रही है वो होगा। आइंदा की हमें क्या मेहनत करनी इसकी रहबरी मिलेगी। maka kita sampaikan apa yang sedang kita lakukan dan kita betul-betul tahu dengan tahqiq, dengan kita teliti benar-benar itu yang kita sampaikan. Maka setelah kita sampaikan kemudian diberi arahan, kita kerjakan sebagaimana arahan yang diberikan, akan dapat banyak faedah kita nantinya. अभी ये पूरे जावा की कारगुजारी 7 प्रोविंस की कारगुजारी होगी। Ini adalah कारगुजारी 7 provinsi. लिहाजा हर प्रोविंस की कारगुजारी, हर प्रोविंस वाला तमाम कारगुजारी को बहुत ध्यान से सुने। Maka hendaknya ini कारगुजारी dari tiap provinsi ini, mewakili provinsi masing-masing.
hendaknya semuanya mendengarkan dengan penuh ketawajuan. ये नहीं हमारी परवीन की काबुलाई को बहुत ध्यान से सुने, बाकी किसी की काबुलाई तो आके सुने नहीं। Jangan sampai, oh provinsi saya tawajuh, provinsi lain, biar itu kan provinsi lain. Tidak begitu. ये तो मेरे दोस्तों, हम तो पूरे आलम के लिए हैं और पूरा आलम हमारा है। ये जो मेहनत की तरतीब मैंने जो तकसीम कर रखी है, वो तो मेहनत बढ़ाने के लिए और आसान करने के लिए है। Dan kita ini adalah untuk seluruh alam. Kita ini adalah kita seluruh alam. Maka adanya berbagai provinsi, kabupaten, negara dan sebagainya, itu adalah untuk peningkatan dan untuk memudahkan kerja. ऐसा नहीं है कि मैं अपने परवीन का जिम्मेदार हूँ, बाकी का जिम्मेदार हूँ, नहीं। मैं जितना अपने परवीन का जिम्मेदार हूँ, इतना ही दूसरे और तमाम परवीन और पूरी दुनिया का जिम्मेदार हूँ। Maka jangan sampai kita berpikiran, saya ini penanggung jawab provinsi saya saja, untuk yang lain saya nggak perlu tahu. Bukan. Sebagaimana kita merasakan tanggung jawab untuk provinsi kita, demikian pula kita merasakan tanggung jawab terhadap provinsi-provinsi lain yang lainnya. लेकिन मैं अपने परवीन की मेहनत को पूरी फिक्र के साथ करते हुए और तमाम परवीन के बारे में भी सोचूंगा, फिक्र करूंगा कि वहाँ मेहनत बेहतर से बेहतर कैसे हो। Maka kita memang tawajuh untuk memajukan dakwah di provinsi kita, tapi beserta itu juga kita pikirkan bagaimana provinsi lain juga maju semaju-majunya. लिहाजा किसी परवीन में अच्छी मेहनत हो रही है और हमने सुना बहुत अच्छी मेहनत है, तो आप उन परवीन वालों से पूछें भी, भाई तुम कैसे मेहनत करते हो। उनको जो मेहनत की तरतीब इख्तियार किए हुए हैं और वो उसूल से है, हम उसको शक्ल सोचें और हम भी अपने परवीन में सही मेहनत करने की फिक्र करें। Maka apabila nanti ada provinsi yang ada peningkatan-peningkatan, hendaknya kita jangan gengsi, datang padanya, tanya, Pak itu bagaimana bisa maju begitu, bagaimana caranya. Maka apabila kita sudah dengar bagaimana cara yang mereka lakukan, dan itu tidak bertentangan dengan usul-usul dakwah, maka hendaknya itu kita terapkan juga, kita bisa tiru di provinsi kita. किताबों में आता है हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत की बात, नफे की बात ये कहीं से मिले, ये तो मुसलमान की, ईमान वाले की घूमी हुई चीज है। Sebab dalam kitab disampaikan bahwa al-hikmatu dhalatul mu'min, hikmah adalah barang hilangnya orang mukmin. Maka barang hilang ketemu di mana saja diambil. और अगर किसी के कमजोर मेहनत है तो हम सोचे हैं हम यहाँ कमजोर है यार, हमने फिक्र नहीं की, अल्लाह हमें माफ फरमावे, हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और उस जगह पर मेहनत मजबूत हो जाए और मेहनत सही तरतीब पर आ जाए, उसकी हम सब फिक्र करें और अपने दोस्त तदबीर सोचें। Dan sebaliknya apabila ada provinsi dalam guzarnya ada kelemahan, ada penurunan, maka kita semua istighfar. Ini karena kelemahan pikir saya, karena ketidakpedulian saya, kurangnya usaha saya untuk bantu provinsi itu sehingga akhirnya begini keadaannya. Maka setelah itu kita niat dan kita usahakan untuk membantu sehingga kerja di sana pun terangkat. और जो तुम्हारे मशवरे होते हैं परवीन के और तुम्हारे हल्कों के, उस मशवरों में ये तदबीरें सोच कर पेश करें जिम्मेदारों के सामने कि भाई फला इलाके का मेहनत कमजोर है, उसकी शिकल हमारे ध्यान में आती है, अगर मशवरे से क्या हो जाए तो इंशाल्लाह से उसको करेंगे। Dan itu bukan hanya dipikirkan, tapi betul-betul dibawa dalam takaza. Baik itu musyawarah provinsi atau musyawarah halaqah atau musyawarah markas. Kita sampaikan bahwa kemarin kita dengar dalam Gazuzari bahwa provinsi Fulan di situ ada satu kawasan yang sangat lemah. Tolong kita kirimkan jemaah ke sana atau bagaimana caranya kita ambil takaza untuk meningkatkan daerah itu. हमारे यहाँ अगर मेहनत अच्छी हो रही है इससे हम और फख्र न करें, बल्कि अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें मेहनत करने की तौफीक दी और अल्लाह से जितनी कोई कमी गुजारी रहेगी उस पर अल्लाह से थोड़ी इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से आगे की तौफीक मांगें। Apabila ada kemajuan dalam provinsi kita sendiri, maka kita jangan gembira, apalagi bangga. Sebab itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang adalah kita syukuri. Kita syukuri dan kita minta lagi kepada Allah Taala untuk diberikan taufik untuk maju lagi di masa yang mendatang. हमारे फरमाया करते हैं काबुलाई के मौके पर, आप बीती कहियो जग बीती मत कहियो, है ना। जो कर रहे हो खुद कर रहे हो वो बताइयो, क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, ये सब तो बताना नहीं है, अपनी जात से जो हम कर रहे हैं वही बताओ। Maka seorang masyayikh dalam Gazuzari beliau sampaikan, yang kalian sampaikan hendaknya yang kalian lakukan, bukan yang dilakukan oleh orang lain atau tertibnya sebenarnya begini, bagusnya begini, bukan. Yang dijalankan itu yang Gazuzarikan. और जब कोई सवाल करें काबुलाई के दौरान में तो पहले सवाल को सुनो, समझो क्या पूछा जा रहा है और समझकर फिर जवाब दो, जो पूछा जा रहा है वही जवाब दो। Dan nanti yang bagian Gazuzari kalau ditanya jangan buru-buru menjawab, dengarkan dulu dengan tenang,
pahami pertanyaannya, baru yang ditanyakan itu saja yang dijawab. बात समझ में आ रही है? Bisa dipahami? और देखो हम ऑडिट करने नहीं आए हैं. Nah, ini bukan untuk audit ini. ऑडिट समझते हैं? हम तुम्हारी पकड़ करने नहीं आए हैं. Oh, bukan untuk mencari-cari kesalahan. हम तुम्हारी कमजोरियां देखने और बेटो बताने नहीं आए हैं. Bukan untuk membuka kelemahan dan menceritakan pada orang lain. हम तो तुम्हारे भाई हैं. ये मेहनत जैसे आपकी हमारी है. बैठकर मुजाकरे के लिए आए हैं कि हमारी कमजोरियां, हम सब में कमजोरियां हैं. इस कमजोरी के पूरा करने की शक्ल क्या है, ये बात मुजाकरे में आए ताकि हम सब की कमजोरियां दूर हो जाए. Jadi kami datang sebagai saudara. Kami ini saudara kalian yang di sini. Maka apa yang bapak kerjakan, ada kelemahan, itu kelemahan kami juga. Maka kami datang ke sini ingin muzakarah bersama-sama. Apabila ada kelemahan, itu kelemahan kami juga. Kita muzakarah bersama-sama bagaimana untuk perbaikan ke depannya. इससे कोई सवाल हम करें तो आप घबराइए नहीं. Makanya kalau ditanya nggak perlu takut duluan. और शर्माइए नहीं. Jangan malu-malu. जो कर रहे हैं वही कह दीजिए. Apa yang dilakukan itu saja yang diceritakan. इसमें शर्माने की बात नहीं है. Ini bukan untuk mempermalukan atau kita merasa malu. ऐसा ही करोगे? Siap begitu ya? और तमाम मजमा आखिर तक बैठकर पूरी बात को ध्यान से सुनने की फिक्र करें. Dan semua majma ini duduk dengan tawajuh sampai selesai. और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें. Dan terus tawajuh pada Allah Ta'ala. और दिली में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सही मेहनत करने की तौफीक दे दे. Dan dalam hati selalu berdoa, ya Allah berikan taufik pada kami untuk berusaha dengan benar. और पूरी उम्मत की मेहनत करने की तौफीक दे दे. Dan berikan taufik pada seluruh umat untuk berusaha dengan benar. करोगे? Siap insyaallah. इंशाअल्लाह. Silakan panggil mana dulu Pak? Jawa Timur. Kusbiran yang mana? Kusbiran enggak? Zuhur dulu. Ya, sekarang ada. Enggak ada. Fatwa dari Abal Dakwah Provinsi Jawa Timur. Jumlah orang yang telah keluar 4 bulan 4.124, yang aktif 3.354. Jumlah orang yang telah keluar 40 hari saja 8.735, yang aktif 6.347. Jumlah ulama yang telah keluar 1 tahun 226. Jumlah yang aktif 223. Jumlah ulama yang telah keluar 4 bulan 517, yang aktif 488. Jumlah tempat sabtu jari ada 6 tempat. Jumlah tempat yang ada taklim haidus sahabat ada 6 tempat. Jumlah masyurat yang telah keluar 40 hari 185 pasang. Jumlah masyurat yang telah keluar 10 hari atau 15 hari 1153 pasang. Jumlah tempat taklim masyurat mingguan 575 tempat. Jumlah masyurat yang keluar dengan tertib yang 3 hari 741 pasang, 40 hari 51 pasang. Jumlah desa 8.698. Jumlah halaqah 240. Jumlah masjid dan mushola 181.554. Jumlah masjid hidup 5 amal, lalu 365 orang 357. Jumlah masjid hidup kurang 5 amal, lalu 3.312 orang 3.315. ये 5 अमल 365 थे और 357 कम क्यों हो गए? Itu 5 amal, jumlahnya kenapa bisa berkurang ini? Ya, karena salah satu mahalah mereka sedang keluar untuk 4 bulan, ada yang 40 hari. Kemudian jumlah mahalahnya berkurang sehingga mereka tidak nama sempurna. Tidak amal saja. Si mahalah saya jaman dikelihui, jelek kali si mahalah saya karena kali jaman mukamal dikelihui, istilahnya motong ikan
निकम आगे। अरे मकामी काम तो अब तमाम मुसलमानों पर है, और जमात में निकलने वालों में थोड़ा मकामी काम है, 5 amal. Ini namanya 5 amal maqami itu bukan milik orang-orang dakwah saja. Mestinya semua orang muslim. Kalau hanya orang tabligh saja, sedikit sekali yang buat 5 amal maqami kalau begitu. Itu bunyad sahih nahi hai. Ini dasar yang tidak benar ini. भाई दीन की मेहनत हर मुसलमान पर या कारकुन पर है? Ini usaha agama ini untuk semua orang muslim atau untuk कारकुन saja? नहीं बोलो. Coba apa jawabannya, untuk orang muslim apa untuk कारकुन aja? तो फिर Kenapa begini? हम अपनी मस्जिद का गश्त नहीं, इसके माने हैं कि मस्जिद का गश्त कारकुन करते हैं, अपने मुसल्लियों को अपने गश्त में शरीक नहीं करते. Tapi kenyataannya dalam jalan umum kita hanya kita saja yang pernah keluar yang buat, sedangkan jamaah masjid yang lainnya tidak kita libatkan. ये 5 amal वाली मस्जिदें जो तुम्हारी हैं, उसमें मकामी गश्त में कितने साथी जुड़ते हैं? मस्जिद में Di masjid Bapak 5 amal maqam berapa? Jaulah 1 berapa orang yang ikut? Di tempat saya jaulah 1 yang ikut ada 50 orang. 50 साथी मकामी गश्त में जुड़ते हैं. कब जुड़ते हैं? Kapan itu waktunya? Asar ke बाद. असल के बाद से कब तक? Sampai kapan? Sampai Isya. असल से ईशा तक 50 आदमी. 50 itu asar ke Isya. तो 50 आदमी असल से ईशा तक क्या करते हैं? Itu apa saja yang dilakukan 50 orang itu? Sekarang program JTI Jawat Al-Istiqlal, asar ke बाद Jawat Al-Istiqlal program. Ada Maghrib Daulah Umumi dibagi Maghrib atau Umumi gas 5 rombongan. 5 jemaah ini. तो ये मस्जिद की तामीर की मेहनत तो रोजाना के लिए है, सिर्फ अब्दौरी के लिए है. Itu Jawat Al-Istiqlal tiap hari atau waktu jualan 1 aja? Tiap hari, rozaना. तो रोजाना 50 आदमी जुड़ते हैं. Tiap hari ada 50 itu ada semua atau beda-beda? Beda-beda. मुख्तलिफ, कभी 50 कभी उससे कम. तो रोजाना 50 आदमी जुड़ते हैं, तो तालीम कितनी देर होती है सर बाद? Itu kalau apa namanya 50 yang kumpul itu berapa, gimana pembagiannya dalam keluar dan ngambil taklim itu? Yang di dalam ada yang keluar dibagi 5 rombongan, tiap rombongan 8 orang sampai 10. Bukan ini yang dakwah taklim istiqlal, bisa coba. Dakwah taklim istiqlal yang saya. Yang dakwah taklim istiqlal yang di masjid ada taklim, ya, kemudian dibagi, ada yang keluar dibagi 3 rombongan atau 4 rombongan. Ini jemaah mikli, jemaah mikli, orang bagi masjid mikli taklim sini. कितनी देर? Berapa lama itu? Lebih kurang waktunya sampai setengah jam. Ada kan tak? फिर Terus setelah itu maghrib untuk asar setelah saat kicin. कितने बजे? Awal asarnya itu berapa asarnya? Asarnya jam 4:30. Jam 4 azan 4:30. Car baca azan sampai car iqamah. और मगरिब Maghrib Jam 5:30 jam 6:00. 6 बजे. तो 2 घंटे रहे, 4 और 2 6 मिनट. Kalau jam setengah 5 azan, jam 6 setengah 5 iqamat, jam 6 azan 1,5 jam berarti ya jaraknya. Ya, antara iqamat sampai azan maghrib 1,5 jam. Jam 5 taklim, kemudian jam 5 taklim. 5 बजे को तालीम शुरू होगी. 5 बजे को तालीम शुरू होगी. 5 बजे. ये तो कह रहे हैं असर से ईशा तक हम रहते हैं. Tadi katanya asar langsung sampai isya. तो 5 बजे तक क्या करते हैं? Sholat asar, waktu sholat, kemudian habis sholat baru dimulai. Asar ke namaz ke बाद तालीम शुरू करते हैं. अरे ये कहता असर में शुरू करते हैं, तुम कहता 5 बजे शुरू करते हैं. Mungkin dia jam dia. Tadi katanya jam 5 masalah asar. Setelah sholat itu langsung. Asar ke namaz ke बाद. तो आधे घंटा तालीम होने के बाद फिर साथी चले जाते हैं. Setelah setengah jam kan berarti belum maghrib. Setelah itu pada pulang apa gimana gitu maksudnya? Enggak istilah dia. Setelah dia amal nggak sebenarnya. Ada ganda taklim ke बाद, dalam taklim istiqlal ke बाद, अपने amal nggak sebenarnya. इनकी मस्जिद के अतराफ में घर कितने हैं? Di sekitar masjid ada berapa rumah? 27 rumah. Setanwe. 97 घर है. Ji. और बाहर मुलाकात और मेहनत में जमात कितनी जाती है? Itu untuk nemuin tadi berapa jamaah dibentuk tadi?
क्या जमात तीन जमातें चार जमातें तो वो जमातें कितनी देर मुलाकात करती है? itu berapa lama itu berapa yang ditemui sekali keluar itu kadang 5 rumah sampai 7 rumah satu jemaat ya jemaat 5 से 7 घर तक मुलाकात करते हैं मगरिब तक नहीं सिर्फ आधा घंटा वो 5 से 7 घर आधे घंटे में जी setengah jam itu rumah kan satu rombongan ya kadang वही तो आधा घंटे में फिर मगरिब से ईशा तक कैसे, असर से ईशा तक कैसे वक्त खाली हुआ? तो आधा घंटा ही हुआ। आधा घंटा तो ini setengah jam kan berarti detiknya tadi setengah jam kan? Detiknya setengah jam 10 menit 15 menit iya setengah jam आधा घंटा 15 menit ya 20 menit maghrib से पहले फारिग हो गया तकरीबन आधा घंटा आधे घंटे में 5 घरों की मुलाकात करते हैं तो मुलाकात ही होती है, बात तो होती नहीं होगी। Kalau dalam setengah jam satu rombongan bisa ketemu 5 rumah, gimana cara bicaranya cepat sekali berarti? Kan dakwah alim istiqlal, kan kita masuk masjid. Tersebar karena ukulana. और नहीं कोई नहीं आएगा तो kalau tidak mau datang gimana? Kalau tidak datang gimana? Kalau tidak mau cash? Ya bicara begitu benar. Tidak betul. Mukhtasar baat karena वही beda-beda mukhtasar baat करके. मुख्तसर बात क्या, मुख्तसर बात किसको कहते हैं? Itu dakwah singkat itu gimana katanya? Kalau nggak mau datang kan di situ dakwah singkat. Gimana maksudnya dakwah singkat itu? Dakwah kepentingan kemakmuran di situ. Masjid kita ambil di Ahmadiyah. Yang lain tahu coba, jangan sampai एक बात आप हज़रात को पहले भी समझाई गई है कि भाई घरों की मुलाकात करने जाओ तो घर वाले को पहले कहो कि भाई माशाल्लाह मस्जिद में अभी अमल हो रहा है, आप अभी मस्जिद में तशरीफ ले चलें। अगर वो मस्जिद में आए तो ठीक है कैश, और अगर ना आए तो उसे वहां बैठकर पूरी बात समझाओ और पूरी बात समझाकर उसको मस्जिद के अमाल की दावत दो और जिस अमल के लिए वो तैयार हो उसके लिए उसे कबूल कर लो। 4 महीने से लेकर 5 अमाल तक की पूरी बात इसे समझाकर इस मेहनत के लिए तैयार करने की फिक्र करना और किसी न किसी अमल के लिए उसको तैयार करना। Jadi sejak awal sudah kita sampaikan bahwa apabila ada UMM atau BCI ini kita buat, maka kita pertama usahakan datang ke rumah tersedia cash ke masjid. Kalau dia tidak siap cash ke masjid, maka kita dakwah sempurna di situ. Apa saja yang kita sampaikan tentang pentingnya agama dan usaha agama, kita terangkan 4 bulan, 40 hari, 5 awal, semuanya kita terangkan dengan panjang lebar kita bentangkan. Kemudian kita usahakan dia kesaksian minimal salah satu dari amal-amal yang kita sampaikan tadi. और फिर उससे आइंदा के लिए वक्त मांगो। अगर आप अभी मस्जिद में आने का आपके पास ये नहीं है तो आप किस वक्त मस्जिद में आज तशरीफ लाएंगे और किस वक्त मस्जिद में पहुंचेंगे? Kemudian setelah itu terakhir kita minta, bila sekarang minta Bapak untuk ngasih waktu ke masjid belum bisa, maka untuk waktu yang akan datang kapan kira-kira punya waktu untuk masjid ini? हम ये न कहें असर के बाद आ जाना, मगरिब बाद आना, बल्कि उससे पूछें कि आप मस्जिद को कब पहुंचोगे। Jadi kita dengan tentukan sendiri, Bapak setelah asar bisa datang ke tempat kami ke masjid, atau setelah maghrib ada program ini. Bukan begitu. Kita tanya Bapak kapan punya waktu untuk masjid. अब वो कहे कि मैं इंशाअल्लाह ज़ोहर के बाद दूंगा, तो आप उसको ज़ोहर के बाद लिख लो। Maka mungkin dia akan jawab, kalau saya punya waktunya setelah zuhur ini, ya sudah, kita tulis dia punya waktu setelah zuhur. इशा बाद के इशा बाद, kalau dia bilang setelah isya, ya kita terima setelah isya. मगरिब बाद के मगरिब बाद, kalau dia bilang setelah maghrib, ya kita terima setelah असर maghrib. बाद के तो असर बाद। kalau dia bilang setelah asar, kita terima setelah asar. जब भी वक्त देने को कहे वो उसका वक्त लिख लो Kapanpun waktu yang dia sebutkan kita terima dan kita tulis. और अपनी मस्जिद की जमात के साथी के साथ कहोगे फला साथी ने फला वक्त मस्जिद से आने के लिए कहा है, हम में से कौन उसका इस्तेमाल करेगा? Kemudian itu kita sampaikan dalam musyawarah bersama kawan-kawan kita bahwa itu fulan dia menyiapkan waktu jam sekian tiap hari, siapa yang siap menemani dan istiqbal dia kalau dia datang. और उसके फिर वो साथी आए तो उसे उसका इस्तेमाल करें, मस्जिद में जो अमल हो उस अमल में शरीक कर लें, या फिर आखिर में उसे लेकर मस्जिद में बैठकर वो उसे पूरी दावत देकर बात समझाए और तैयार करे। Maka apabila dia datang, hendaknya yang sudah siap untuk istiqbal dia istiqbal dengan baik. Apabila ada amal di situ, kita bawa dulu dalam amalan yang sedang ada di situ. Minimal paling kurang kita bawa dia duduk di masjid, kita sampaikan dakwah sempurna padanya. समझ में आई बात? Bisa dipahami?
क्या ऐसे करोगे कि जो कर रहे हो वही करोगे? Siap buat seperti ini atau seperti yang dulu-dulu? सबके लिए बात है, Dan इनके नहीं ini है। untuk semuanya ya. अगर हमारी मस्जिद की शादी कभी भूल जाए तो हम याद क्या नहीं कराएं। Dan juga kalau teman kita di masjid makomnya ada yang lupa, maka diingatkan. समझ में आई नहीं आई? Dipahami. आपके 97 घर जो हैं मस्जिद के, उन तमाम 97 घर के एक एक बालिग मर्द से आपकी मुलाकात हो गई? Itu 97 rumah itu, semua laki-laki balik sudah pernah ditemui? सुधर Oke. एक से Jadi setiap orang balik. कितने बालिग मर्द हैं? Ada berapa laki-laki baliknya? 158. Exo atawan. अच्छा, इन 158 से तुम्हारे कितने दिनों में मुलाकात हो जाती है? Itu ketemu 158 orang itu dalam berapa hari, berapa lama bisa ketemu semuanya itu? Ya, sejak hidupnya Rasul sampai sekarang. पहले से अभी तक हमने गिना नहीं, लेकिन सबसे मुलाकात हो गई। नहीं, ये नहीं है। सबसे हो तो गई। असल में हम देखो भाई, हंसने की बात Saya bilang lagi, jangan saya ketawa Pak, yang kata itu tidak perlu ketawa. हंसने की बात नहीं है, Bukan tidak perlu ditawakan, ये फिक्र की बात है। ini perlu dipikirkan. और ये इनकी बात नहीं, हम सब की है। Dan ini bukan hanya jawaban beliau, ini kita semuanya ini mewakili. हमारे बड़े हमें फरमाते हैं, हम अपने मोहल्ले के हर मुसलमान भाइयों की मुलाकात की तस्वीर ऐसी बनाएं कि हर 15 दिन में हर मुसलमान की अल्लाह के दीन की निस्बत पर मुलाकात हो जानी चाहिए। Masya kita sampaikan bahwa hendaknya di mahala kita ini setiap orang muslim sudah kita temui semuanya dalam waktu 15 hari, kita sampaikan amal agama, dakwah agama pada mereka. तो आप रोजाना इस ऐसी तरतीब बनाएं अपने घरों की, और हर घर की मुलाकात और हर घर की हर फर्द की मुलाकात की तरतीब बनाएं। Maka kita buat tertib harian dengan benar seperti diarahkan tadi, dan tiap-tiap rumah dengan tertib kita datangi. और घर की मुलाकात में जितने साथी वक्त देते हैं, इनको बारी-बारी घर की मुलाकात में इस्तेमाल करें। Dan untuk mendatangi tiap-tiap rumah ini, terima berapa waktu saja yang diberikan kawan-kawan kita, gunakan mereka untuk mendatangi rumah-rumah tadi. और इनकी मुलाकात के लिए तफसीली मुलाकात और उनसे बात करने के लिए जितना वक्त दरकार हो इतना वक्त लगाएं। Dan dalam mengirimkan kawan-kawan kita untuk datang ke rumah-rumah tadi, kita sesuaikan dengan kesiapan waktunya. Kalau waktunya lama, sama-sama siap lamanya, berarti bisa detail. Kalau tidak, ya sepanjang waktu yang dia siapkan itu saja. और इसकी इब्तिदा जिसे बड़े फरमाते हैं 2.5 घंटे पूरे लगाएं। Maka untuk memulainya ini adalah dimulai dengan 2,5 jam sempurna. 2.5 घंटे आमाल मस्जिद के लिए है। 2,5 jam adalah untuk amal masjid. उसमें बाहर की मेहनत भी है और मस्जिद के अमाल भी है। Itu untuk kunjungan keluar dan juga untuk amal di dalam. तो सब अमाल जिंदा करने का नाम 2.5 घंटे की मेहनत है। Untuk menunjukkan amal masjid inilah 2,5 jam nama programnya. लिहाजा बाहर की भी मेहनत हो, मस्जिद के भी अमाल हो। Maka itu 2,5 jam untuk di luar dan di dalam juga. मस्जिद के अमाल में दावत है, तालीम है, जिक्र इबादत है, खिदमत, तमाम अमाल जिंदा करने हमें अपनी मस्जिद में। Di dalam masjid itu ada amal dakwah, ada ta'lim, ada zikir ibadah, ada khidmat. Ini semua perlu dilakukan di masjid kita. और हमारे बड़े तो फरमाते हैं, इस 2.5 घंटे की मेहनत के जरिए हमें अपनी 24 घंटे मेहनत को आबाद करने की फिक्र करनी है। Dan masyarakat kita katakan, dengan 2,5 jam kita berikan untuk menunjukkan amal masjid ini, kita berpikir bagaimana 24 jam hidup kita sesuai dengan amalan masjid. ऐसा नहीं कि एक ही वक्त में सब फारिग करें, Jangan sampai kita buat 2,5 jam ini waktunya sama semua. बल्कि तमाम साथी अपनी अपनी तरतीब बनाएं। कोई सुबह फारिग करें, कोई दोपहर को फारिग करें, कोई शाम को फारिग करें। अपनी तरतीब बनाकर उस एतबार से मस्जिद में इन अमाल को जिंदा किया जाए। Maka kalau ada yang berbeda-beda lebih bagus lagi, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, sehingga masjid terus-menerus hidup dengan amal. जिसको जिस मौके जिस वक्त आसानी हो उस वक्त अपने वक्त निकालकर मस्जिद को दे। Maka tiap-tiap orang sesuaikan dengan kemudahan jadwalnya sendiri-sendiri, berikan 2,5 jam untuk masjid. जैसे बहुत से इलाकों में
सुबह फजर की नमाज के बाद कुछ वक्त देते हैं। मुसल्ली तमाम मस्जिद की आबादी की मेहनत के साथ बाहर मेहनत होती है। कुछ लोग जोहर के बाद देते हैं, कुछ असर के बाद देते हैं, कुछ मगरिब के बाद देते हैं, कुछ 10 बजे देते हैं। तो ये तमाम की बाकायदे लोग तरतीब बनाकर, जमातें बनाकर इस तरतीब से मस्जिद में 24 घंटे अमाल जिंदा करने की मेहनत करते हैं। Sebagaimana dalam satu daerah mungkin bagi mereka mudah kalau setelah subuh. Beberapa orang, maka kalau cukup orangnya kemudian dibuat usaha memurkan masjid. Ada yang jam 10 diterima jam 10, ada yang setelah zuhur, ada yang setelah asar, ada yang maghrib, ada yang isya. Diterima saja semuanya, kemudian diatur bagaimana penggunanya dengan tertib yang baik. बात समझ में आ रही है? Bisa dipahami tuan-tuan? अगर हमारे साथियों की तरतीब अगर पूरे दिन भर दिन के एतबार से बनेगी ना, तो मुसलमान को जो दावत देंगे जब भी वो मस्जिद में आएगा हमारे साथी मौजूद होंगे और तमाम अमल जिंदा होंगे। Kalau kawan-kawan kita ini memberikan waktunya berbeda-beda seperti kali sepanjang hari, maka orang yang kita taskan untuk datang ke masjid kapanpun dia datang akan ada orang dalam masjid untuk menyambutnya dalam amalan. हमारे हज़रत फरमाते थे हर मुसलमान से कहो ये अपना फारिग वक्त मस्जिद को दे दे। Masyaallah, masya kita katakan, sampaikan pada setiap orang muslim, berikan waktu luang Anda untuk masjid. और ये कब होगा जब हम पहले देंगे। Itu kapan bisa terjadi? Kalau kita yang mulai beri waktu dulu. हम देकर उम्मत को दावत देंगे तो उम्मत हमारा साथ दे देगी। Apabila kita memberikan waktu dulu pada masjid, kita doa pada mereka, baru mereka siap memberikan waktunya untuk masjid. और इंशाअल्लाह मस्जिद की आबादी की महफिल हो जाएगी। Maka dengan itu insya Allah masjid akan makmur dengan amalan-amalan. करोगे? Siap begitu? Insyaallah. कौन कौन करेगा? Siapa yang siap? देखो हाथ उठाते हो, सोच समझ के उठाइयो। Ini aja, angkat tangan dengan dipikirkan dulu ini, janji ini. सियासत वालों के यहाँ हाथ उठाए जाते हैं, उनको करना नहीं हो तो हाथ उठा देते हैं। Ini bukan seperti partai politik, asal angkat tangan untuk menyenangkan saja. ये तो दावत की मेहनत है। Ini usaha dakwah, bukan partai politik ini ya. ये हमारे और अल्लाह के दरमियान का मामला है। Kalau kita udah angkat tangan, janji pada Allah berarti. मेरे तुम्हारे दरमियान का मामला नहीं है। Bukan janji dengan saya. लिहाजा याद रखना करना है। Ini kalau udah angkat tangan ya sudah, berarti udah janji dengan Allah ini. करेंगे? Siap. Insyaallah. और कोई बात तो क्या नहीं हो गई पूरी बात? चलो jumlah masjid hidup kurang dari 5 amal 3.312 pada 3.315 jumlah tambah 3 hari 1,81,554 मस्जिदें हैं और काम हो रहा है कितनी मस्जिदों में? 3.600 3.600 3,615 में। ये कब से हो रहा है 3,600 में? Kau sawal lagi. Ya, kamu. अरे 3,600 मस्जिदों में मेहनत कब से जितना हुई है? Ini beliau tanya, ini 181.000 masjid lebih. Dan yang ada amal dakwah kalau di total semuanya 3.660-an lebih. Nah, ini amal dakwah ada di sekitar sekian ribu masjid ini sejak kapan ada ini? yang mana? Ini nih yang 5 amal dengan beberapa अभी 1,78,000 मस्जिदें बाकी है, उसकी क्या फिक्र की उन्होंने? Beliau tanya aja sekarang, yang ini aja tahu saja. Kata beliau, berarti sisanya yang belum ada amalan itu kan 178.000 lebih. Nah itu bagaimana ini yang dipikirkan untuk itu? Kalau kita akan memperbanyak untuk jamaah 3 hari dan jamaah 4 hari 4 bulan, kemudian ke masjid-masjid yang kita Kami hambara anzalna ke jada sejada kemat benake binti tinjin ki cilegi और काबुली इनके लिए जो 1,78,000 के लिए आप हजरात को इससे पहले दूसरी गश का क्या मकसद है, बात समझाएगी थी? Coba jaulah dua itu gimana caranya? Namanya jaulah dua itu untuk apa dan bagaimana? Daulah dua kita pergi ke masjid yang lain untuk menghidupkan amal masjid yang lain. दूसरी मस्जिद को जाकर वहाँ के काम जिंदा करने के लिए जिंदा करने के लिए। तो आप हर 2 महीने में कितनी मस्जिदों में नया काम जिंदा करते हैं? Setiap 2 bulan ada berapa masjid yang sudah diwujudkan amalan, masjid-masjid baru yang dihidupkan amalan. Dari mahalah saya itu selama 2 bulan itu kalau tambah 1 masjid sampai 2 masjid. Pada mahalan saya hal 2 महीने तकरीबन 1 masjid या 2 masjid hal 2 महीने. याद है?
Kalau begitu kenapa nggak nambah kalau menghitungnya begitu? Ya, ada yang naik, ada yang turun, ada yang mengerjakan, ada yang mengerjakan. Yang pahala tadi. Saya mengerjakan, tapi pahala lain ada yang mengerjakan. Macam begini. Saya jawab dua. Saya buat jawab dua, yang lain nggak buat. Tiga naik turun. कुछ बाकी माहौलों में कुछ कमी भी आती है। अगर एक माहौल में मसला उसमें तरक्की होता है, लेकिन दूसरे मस्जिद में तनाजुरी भी होता है। ये तनाजुरी कैसे होगी? दूसरा गश्त जो है, दूसरा गश्त आप कौन सी मस्जिद करने जाते हो? उन्हीं मस्जिद में जाते हो जहाँ गश्त होता है या नई मस्जिद में जाते हो? Beliau tanya jaulah dua itu dibuatnya di masjid yang bagaimana? Masjid yang ada amalan atau yang ada jaulahnya atau yang kosong atau yang gimana? Kami jaulah dua, kita kirim 4 rombongan. Ada yang baru, ada yang menguatkan. हमारे महानगर से 4 जमातें दूसरे गश्त के लिए, उनमें से नए मस्जिद के लिए बस और बस मस्जिद वो जहाँ अमल हो रही है उसकी तायीद के लिए हम भी भेज दें 4 जमातें। तो आपको तो हमेशा एक बात समझाई जा रही है, दूसरा गश्त उन मस्जिदों में करने के लिए जहाँ काम नहीं हो रहा है, वहाँ जाकर उस मस्जिदों में काम को जिंदा करने के लिए जाना है। Jadi namanya jaulah dua itu, kita datang ke masjid yang betul-betul nggak ada amal, yang masih kosong, kita datang ke sana supaya ada amal di sana. आप 4 जमातें भेजे, एक जमात में कितने आदमी होते हैं? Tadi 4 jamaah jaulah dua itu, satu jamaah berapa orang? 8 orang, ada yang 6 orang. Saya 8 satu. ये भी कमजोरी है। Ini kemana yang lemah juga ini berarti. गश्त में कितने आदमी चाहिए? Dalam jaulah berapa orang idealnya? बाहर मुलाकात में जब गश्त में जमात जाएगी कितने आदमी जाते हैं? Itu jaulah jamaah yang keluar untuk jaulah umum itu berapa orang bagusnya? 10 orang. Dasar. तो 8 आदमी जाते हैं, 10 कैसे गश्त में जाएंगे? Itu kalau 8 yang berangkat gimana bisa keluar 10 orang? Itu हमारे महल में जब अपना गश्त हो अल्हम्दुलिल्लाह 10 अधिक जाते हैं लेकिन दूसरे गश्त की बात कह रहे हैं हम तो लेकिन दूसरे गश्त के लिए बस इतने से तैयार बस वो हम देते हैं। नहीं गलत है। दूसरा गश्त भी हम में जो हमारे मोहल्ले का गश्त है, ऐसे दूसरा गश्त दूसरी मस्जिद में जाके करना है। Bahkan hendaknya namanya jaulah dua itu juga sama dengan bentuk jaulah satu yang kita buat di masjid kita sendiri. 4 जमाते में बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ। Kalau 15 आदमी तो कम से कम होना चाहिए। kalau begitu nggak perlu sampai 4 jamaah, 3 jamaah, 2 jamaah pun nggak apa-apa asalkan lengkap. और अगर 10 जाते हो तो वहाँ के मकामी आदमी को खुशामद करके अपने साथ तैयार करके फिर गश्त करो। Sebab mestinya itu idealnya 15 orang. Kalau seandainya berangkat 10 orang, maka 10 orang ini berangkat, siapkan orang tempatan untuk ikut serta dalam jaulah kita. और ये जो दूसरा गश्त है तो गश्त करने नहीं है, वहाँ मेहनत करने के लिए है। Dan namanya jaulah dua itu bukan supaya kita jaulah dua di sana, tapi supaya orang sana buat usaha. और उन लोगों को गश्त में अपने साथ लेकर जाने के लिए, खड़ा करने के लिए है। Dan supaya orang-orang sana ikut dalam jaulah yang kita buat. तो जितने साथी ज्यादा होंगे, मेहनत अच्छी होगी और वो मस्जिद खड़ी हो जाएगी। Maka semakin banyak yang datang ke sana dan usaha bagus, amal masjid akan segera bangkit. फिर उस दूसरी मस्जिद में जाकर करते हैं, वहाँ और मेहनत क्या करते हैं? वहाँ गश्त करने जाने के अलावा और मेहनत कुछ करते हैं? Di masjid yang didatangi untuk jaulah dua itu hanya datang untuk jaulah dua saja atau ada usaha lain untuk dibuat di sana? Yang memberikan masa 8 jam itu kadang-kadang mereka bantu Jumat ganti jadi wali sati, कभी-कभी वहाँ जाकर जय जाते वहाँ लगाते। नहीं वो तो ठीक है, बहुत अच्छा है, ये मुनासिब है, लेकिन कभी कभी का सवाल नहीं है। हफ्ते भर में 1-2 मरतबा जो हमारी मस्जिद के साथी हैं उन्हें 2.5 घंटे वहाँ मेहनत करने के लिए भेजना चाहिए कि गश्त के मौके पर जिन लोगों ने इरादे हमारे साथ किए कि इंशाअल्लाह तुम्हारा साथ देंगे, उनके जाके मुलाकात करें, उनका जहन बनावें, और जिस दिन गश्त का दिन हो उस दिन सुबह से फिक्र करें और एक जमात पहले से भेज दें कि आज माशाल्लाह गश्त का दिन है, आप हज़रात माशाल्लाह हमारे साथ पारे वक्त करके आप भी असल में जहाँ जिस वक्त गश्त का वक्त हो उस वक्त उनको दावत देके मुतफक्की करें और उन्हें पहले से जाकर उन्हें अपने साथ तैयार करके आप गश्त में शरीक करें। Jadi kalau hanya kadang-kadang bagus juga, cuman mestinya tidak begitu. Mestinya diatur dengan tertib. Jadi di tempat kita jaulah dua itu hendaknya
kita kirim jamaah dari masjid kita sendiri untuk 2,5 jam di sana, paling tidak idealnya 2 kali dalam seminggu. Terutama adalah pagi hari, yang hari itu hari Jaulah 2 kita ke sana. Jadi hari akan Jaulah 2 di sana, maka hari itu kita udah kirim jemaah 2,5 jam di masjid tersebut. Kita buat usaha atas mereka, bentuk pikir mereka, supaya mereka ikut serta dalam Jaulah 2 kita. Dan nantinya di hari yang lain kita juga kirim jemaah ke sana untuk mendatangi orang-orang yang siap, orang-orang yang mau keluar dan sebagainya. Kita bawa dalam 2,5 jam dan untuk menguatkan orang-orang yang ada niat tadi dengan Jaulah umum kita ke sana. और ये तमाम मस्जिद वालों को इस पर लाना है आपको Dan kita bawa semua jamaah masjid untuk ikut serta dalam amal ini. कि वो दूसरे कश के जरिए नई मस्जिदों को मेहनत के लिए खड़ा करें. Dan jadi dengan Jaulah 2 ini diharapkan masjid yang lain akan bangkit amalan di sana. अभी 365 जमातें जो 5 आवाज कर रही हैं, ये तो दूसरा कश कर ही रही हैं. अगर ये 2 महीने में 365 मस्जिदें नहीं जिंदा करें तो 2 महीने में 7 हो जाएगी. ऐसे हर मस्जिद को इस पर लाने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह तमाम मस्जिदों में मेहनत हो जाएगी. Ini kan yang 75 amal 357 masjid. Maka apabila semua masjid buat seperti itu dengan tertib yang benar, maka dalam 2 bulan bertambah 2 kali lipat, dalam 4 bulan bisa 3 kali lipatnya dari jumlah ini akan bertambah dengan cepat. ऐसे शहरों जमातें जो तुम्हारी हैं वो अपनी अपनी मस्जिदों में न भेजो, बल्कि ऐसे इलाकों में भेजो जहाँ काम नहीं है, वहाँ 3 दिन की जमातें जाकर 3 दिन में उन लोगों को इस मेहनत पर तैयार करें. Demikian pula jamaah 3 hari kita jangan dikirim ke tempat-tempat yang sudah biasa-biasa kawan-kawan kita sendiri, tapi di tempat-tempat yang jauh, yang agak jauh-jauh, yang kosong-kosong itu kita kirim jamaah 3 hari ke sana. Siapkan mereka untuk keluar 3 hari juga dari masjidnya. और जो जमात अपने यहाँ आए, अपने इलाके में जहाँ कमजोर काम है, उन जमातों को उन कमजोर इलाकों में डालकर मेहनत में डालो. Dan apabila ada jemaah dari luar yang datang, maka lihat di tempat kita ini yang lemah mana, jemaah ini kirim ke sana. और जमात को पूरी बात समझाकर फिर भेजो. Dan diberikan kepahaman dulu dengan sesempurna mungkin, kemudian baru dihantar di sana. और जमातों को भेजो तो उनकी खैर खबर लेते रहो, क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, कितना हुआ, उनको आइंदा तरगीब देना, हिम्मत अफजाई करना, ये पूरा काम हमारा है. Dan kerja kita bukan hanya mengirimkan saja, tapi selalu kita pantau, kita datangi, kita tanya berapa yang sudah dijalankan, berapa lagi sisanya, dan bagaimana ke depannya. Ini semua kita perhatikan dan ini adalah kerja kita juga. हमारे बस में करेंगे, फिर अल्लाह से कहेंगे अल्लाह हमारे बस में हम कर रहे हैं, अब आप ही कबूल फरमा लीजिए, आप ही आसान कर अल्लाह का इंशाअल्लाह अपनी कुदरत से जिंदा फरमा देगा. Maka apabila yang kita mampu kita buat, kita lakukan, maka sisanya yang kita bisa lakukan, kita tinggal doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, apa yang mampu kami buat, sudah kami buat ya Allah, tolong terima ya Allah, dan Engkau yang maha kuasa untuk menyebarkannya ya Allah. Maka dengan begitu insya Allah Allah akan tingkatkan lagi. Jumlah orang yang mengerjakan 2,5 jam 5.340, sekarang 5.997. Jumlah masjid hidup usaha mengamalkan masjid yang lalu 238, sekarang 285. Jumlah rumah hidup taklim harian 8.173, sekarang 8.172. Jumlah rumah hidup taklim harian sekarang mencapai 64, 2.697, sekarang 2.732. Jumlah orang yang keluar 4 bulan setiap tahun yang lalu 329, sekarang 313. Jumlah orang yang keluar 10 hari setiap bulan 224, sekarang 237. Jumlah orang yang mengeluarkan 8 jam setiap hari yang lalu 400, sekarang 420. Jumlah seluruh jamaah 4 bulan lalu 38 jamaah, sekarang 16 jamaah. Jumlah jamaah 4 bulan jalan kaki yang lalu 3, sekarang 7. Jumlah seluruh jamaah 40 hari yang lalu 222, sekarang 242. Jumlah jamaah 40 hari jalan kaki yang lalu 14, sekarang 12. Jumlah masjid yang mengeluarkan jamaah 4 bulan atau 40 hari dalam negeri yang 4 bulan 1 masjid, yang 40 hari 7 masjid. Sekarang yang 4 bulan 3 masjid, yang 40 hari 29 masjid. Jumlah masjid yang mengeluarkan jamaah sempurna 4 bulan negara jauh yang lalu IPB 8 masjid, negeri jauh 1 masjid, yang sekarang IPB 5 masjid, negara jauh 1 masjid.
Jumlah jamaah yang dikirim ke luar negeri kosong. Jumlah jamaah 40 hari masturot, lalu 3 jamaah, sekarang 9 jamaah. Jumlah jamaah 10 hari 15 hari masturot, lalu 10 jamaah, sekarang 33 jamaah. Jumlah jamaah 3 hari masturot, lalu 138 jamaah, sekarang 138 jamaah. Jumlah jamaah 4 hari masturot ke luar negeri yang lalu ke IPB 4 jamaah, sekarang secara jauh kosong. Sekarang IPB 3 jamaah, secara jauh kosong. Jumlah orang yang pernah belajar tertib juga bisa mungkin yang lalu 50, sekarang 48. Jumlah desa di mana kerja dimulai yang lalu 56, sekarang 70. Jumlah pulau 146. Jumlah pulau yang sudah dimasuki jamaah yang lalu 6, sekarang 57. Ini pulau-pulaunya apa masalahnya kok belum semuanya? Yang belum maksudnya beliau, yang belum dikirim. Yang belum habis saja insyaallah habis deh. Yang penting sih habis dari sini. Itu dari jadi apa jadwal tadi itu 146 itu sudah didatangi betul, dicek benar apa gimana angka itu? Ya. Di semua pulau ada orang muslimnya. Ya. Apa yang kok? Berapa yang kosong, berapa yang ada penduduknya? Yang ada penduduknya. Ini abadi ini. Itu di semua pulau 146 itu ada masjidnya semua. Ya. Di masjid ini. Ada dakwah juga. Semuanya itu. Jemaat besar ini. Jadi baru 57 pulau yang datangi jemaah. Ya. Ahli Al-Zaidi tertib deh. Insyaallah tutup jalan. DKI Jakarta. 140 banyak ya. 154 an. 146. 140. Jawa Timur banyak. Itu kan 57 yang direng. Ya, 50. Provinsi DKI Jakarta. Pertama, jumlah orang yang telah keluar 4 bulan 3.542, yang aktif 2.447. Kemudian jumlah orang yang telah keluar 40 hari 3.806, yang aktif 1.981. Kemudian jumlah ulama yang telah keluar 1 tahun 28, kemudian yang aktif 21. Kemudian jumlah ulama yang telah keluar 4 bulan 100 orang, yang aktif 79. Kemudian jumlah ulama mutarik क्या मतलब है? Itu ulama kan ada yang aktif tuh. Yang aktif itu gimana maksudnya aktif itu? Aktif masih ke markas, masih keluar. Markas menjadi और हर साल किले gitu. Markas jadi kita dibenci ya 40 hari tiap tahun. Ya. और terus apa lagi caranya dia aktif itu? महीने के 3 दिन Ya 3 hari. 3 दिन हर महीने. देते हैं 3 hari tiap bulan. Tiap bulan. और जो नहीं मुतारिक उनका क्या करते हो? Terus yang tidak aktif itu apa yang dibuat itu? Ya kita kadang-kadang setiap pertemuan kita undang, kita datangin lagi untuk kasih tugas. Kan उसकी ज़रूरत करते हैं उसको दवा देते हैं ये जो मुतारिक उलमा है उनके साथ जाते हो अकेले जाते हो? itu mengunjungi mereka dengan membawa ulama yang aktif atau kita saja yang datang? Kebanyakan kadang-kadang kita saja. Aksar ham खुद जाते हैं. हाँ नहीं ये उलमा जो मुतारिक हैं उन्हें साथ लेके जाया करो. Maka hendaknya kita bawa ulama yang aktif ini untuk datang pada ulama yang kurang aktif. उलमा के पास जाएंगे उसके साथ तुम भी रहो तो इंशाल्लाह इससे और मफा ज्यादा होगा. Jadi kita juga pergi, tapi kita sertakan ulama yang aktif ini sehingga kita akan dapat mendapatkan faedah nanti. ठीक है ना? Ya, insyaallah.
Kemudian jumlah tempat satu hari 3 tempat, yang ada hayatul sahabah 3 tempat. Kemudian jumlah masturat yang keluar 40 hari 242 tempat. Kemudian jumlah masturat yang keluar 10 atau 15 hari 779 pasang. Kemudian jumlah tempat tali masturat mingguan 204 tempat. Kemudian jumlah masturat yang keluar dengan tertib 3 hari 1350 orang, 40 hari 82 orang. Kemudian jumlah desa dan kelurahan 772. Kemudian jumlah halakoh 158. Jumlah masjid dan musola 19.855. Kemudian hidup masjid, hidup 5 amal, ya periode kini 278. Cuma ada periode kini. Jumlah masjid hidup kurang dari 5 amal 1.852. Kalau udah datang ya kita mesti yang cek ke sana. Kita yang minta datang ke sana. Nah, kalau mereka nggak ngasih, kita yang minta. Nah, terus udah dibacakan langsung aja, nggak usah masalah. Jumlah jemaah 3 hari setiap bulan 517. Jumlah orang yang mengerjakan 2,5 jam setiap hari 2.899. Jumlah masjid yang hidup usaha memakmurkan masjid 110. Jumlah rumah hidup taklim harian 3.299. मस्जिदों का काम है 17,000 मस्जिदों का काम नहीं है. Ini berarti dari 19.800 sekian ini masih ada hampir 17.000 lebih yang nggak ada amal dakwah sama sekali berarti ya. Juga ini ketahuan. Yang ada amal dan dikurang itu kita lihat ini, kita pahami nggak dengan keadaan kita ini? Ya, gimana? Apa yang dipahami apa ini? Ya, paham. Masih banyak masjid yang हालांकि सबसे ज्यादा जमातें जाकर में आती हैं. Padahal jemaah paling banyak datang itu ya ke Jakarta. और सबसे पुराना काम जाकर में है. Dan kerja paling lama ya di Jakarta kalau di Pulau Jawa ini. और हाल ये है कि 19,855 मस्जिदों में से 2,135 भी नहीं है, एक कोई है. Hanya dari 19.855 itu hanya 2.100 lebih yang ada dakwah. 2.100 lebih, 2.135 kurang lebih, yang lainnya masih kosong. Gimana itu Ustaz itu? Padahal semestinya jumlah yang di situ kurang dari 5 amal itu mestinya jumlah segitu itulah yang mestinya ada 5 amal itu. Mestinya itu. Sebab 5 amal itu mestinya untuk semua masjid.
Coba tadi kan sudah diterangkan kalau jumlah 2. Kalau di sini ini gimana jumlah 2-nya seperti yang diterangkan tadi apa dengan cara yang lain? Iya sama. Namanya gimana maksudnya? Ya jumlah 2 kita berangkat 5 orang. 5 saya. पाँच साल की क्या तरी दूसरा का के लिए 5 साल की दूसरी कश के लिए नहीं कैसे तो आप यूं कहो कि सही कश करो. Makanya kalau udah begitu perbaiki jumlah 2 kita. Gak ada tuh 5 orang dari jumlah itu jumlah 2 itu gak jalan itu. ये तो और ज्यादा मुश्किल है तुम्हारे यहाँ तो. इससे पहले तो मास्टर फिर भी कुछ तरतीब से काम कर रहे थे वो तो. चलो Terus 8 orang. Jumlah orang yang keluar 4 bulan setiap tahun 386. Kemudian jumlah orang yang keluar 10 hari setiap bulan 43. Jumlah orang yang meluangkan 4 jam setiap hari 43. Kemudian jumlah orang yang meluangkan 8 jam setiap hari 43. Jumlah seluruh jemaah 4 bulan 47 jemaah. Ya, yang lalu, yang sekarang 18. Jumlah jemaah 4 bulan jalan kaki yang lalu 14, sekarang 22. Jumlah seluruh jemaah 40 hari yang lalu 112, sekarang 145. Kemudian jumlah jemaah 40 hari jalan kaki yang lalu 8, sekarang 16. Jumlah masjid yang mengeluarkan jamaah sempurna 4 bulan 40 hari. 4 bulan 6 masjid, 40 hari 14 masjid yang lalu. Yang sekarang 4 bulan 6 masjid, yang 40 hari 14 masjid. Kemudian jumlah masjid yang mengeluarkan jemaah sempurna 4 bulan negara jauh belum ada. Kemudian jumlah jemaah yang dikirim ke luar negeri IPB 7 jemaah negeri jauh lalu belum ada. Sekarang IPB 16 jemaah negeri jauh 2 jemaah. Kemudian jumlah jemaah 40 hari masyhur 5 yang lalu, sekarang 3 jemaah. Jumlah jemaah 10 hari 15 hari masyhur yang lalu 42, sekarang 7 jemaah. Kemudian jumlah jemaah 3 hari masyhur yang lalu 187, sekarang 157. Kemudian jumlah jamaah 40 hari masyhur ke luar negeri IPB 3 jamaah, negeri jauh 1 jamaah. Ini kerja surat ini berkurang semuanya ini gimana ini? Ini baru sampai Juni, belum sampai Agustus. Jadi Juni kita cerita kamera Patra tu Agustus nanti. Nah, kalau itu masalahnya kenapa yang lain nggak berkurang, ini surat parah sekali kurangnya. Ini bisa kita lihat di monitoring. Kalau ini, ini nggak ada di monitoring ini. Ya, karena hasil musyawarah. और ये क्या ठीक से नहीं Tidak. Jamaah 3 harinya berapa orang? 3 hari di jalan. Jamaah 3 hari berapa orang? Jamaah 40. Dari mana saya biasa nama? Jamaah surat, bukan surat. Jamaah rijal. Rijal. Iya, rijal. Berapa Rijal. orang? Ya, 11 orang. Dari pahalanya? Kira. Nama Allah 5 orang tambah yang lain. Kamu yang berbeda. Rata-rata di Jakarta. Rata-rata ya 10 orang. Das, लेकिन makhluk जुलकर ठीक है 10 आदमी की जमा जाती है 10 orang itu. Ya. चिल्ले की भी 40 hari berapa orang jemaahnya? 40 hari ya minimal 8 orang. Kamu 10 से इब्तिदा 10 और 15 के बीच में जमात होनी चाहिए. Namanya jamaah itu dari 10 sampai 15. 10 से कम नहीं 15 से ज्यादा नहीं. Tidak kurang dari 10, tidak lebih dari 15. 12-13 की जमात बनाकर मजबूत जमातें बना के भेजा करो. 12, 13 itu jamaah itu. और सबकी बात है Dan ini untuk semuanya ini. Terus. Udah. Kemudian jumlah orang yang telah belajar tertib 2 bulan di Nizamuddin 56 orang. Jumlah desa di mana kerja telah dimulai. Kalau ya udah cukup. Kalau ini tidak dengan detail tambah disampaikan gitu ya. Banten, Pak. Banten silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah orang yang telah keluar 4 bulan 211, yang aktif 133. Jumlah orang yang telah keluar 40 hari
264, yang aktif 139. Jumlah ulama yang telah keluar 1 tahun 10, yang aktif 7. Jumlah ulama yang telah keluar 4 bulan 12, yang aktif 10. Jumlah ulama yang telah keluar 40 hari 5 orang, yang aktif 4 orang. Jumlah tempat tabbojahi 1 tempat. Jumlah tempat yang ada taklim ayatul sahabat 1 tempat. Jumlah masroh yang telah keluar 40 hari 9 pasang. Jumlah masroh yang telah keluar 10 atau 15 hari 53 pasang. Jumlah tempat taklim masroh mingguan 16. Jumlah masroh yang keluar dengan tertib 3 hari 103 pasang, 40 hari 3 pasang. Jumlah desa atau kelurahan 334. Jumlah halaqah 19. Jumlah masjid dan musola 12.448. Amal makom dan mengikuti. Jumlah masjid hidup 5 amal sempurna 23, yang lalu yang sekarang 23. Jumlah masjid kurang hidup kurang dari 5 amal, yang lalu 166, sekarang 173. Jumlah jamaah 3 hari rata-rata setiap bulan, yang lalu 30, sekarang 33. Jumlah orang yang mengerjakan usaha 2,5 jam setiap hari, yang lalu 169, sekarang 167. Jumlah masjid yang hidup UMM, yang lalu 1, sekarang 7. Jumlah rumah hidup taklim harian, yang lalu 239, sekarang 234. Jumlah rumah hidup taklim harian yang mendapat 6 sifat, yang lalu 113, sekarang 117. Jumlah orang yang keluar 4 bulan setiap tahun, yang lalu 16, sekarang 17. Jumlah orang yang keluar 10 hari setiap bulan, yang lalu 5, sekarang 5. Jumlah orang yang meluangkan 8 jam setiap hari, yang lalu 8, sekarang 8. Jumlah seluruh jemaah 4 bulan, yang lalu 1, sekarang 1. Jumlah jemaah 4 bulan jalan kaki, yang lalu 3 orang, sekarang 1 orang. Jumlah seluruh jemaah 40 hari, yang lalu 7, sekarang 10. Jumlah jemaah 40 hari jalan kaki, yang lalu kosong, sekarang 2. Jumlah masjid yang mengeluarkan jemaah sempurna 4 bulan 40 hari dalam negeri 40 hari, yang sekarang 1 jemaah. Jumlah masjid yang mengeluarkan jemaah sempurna 4 bulan negeri jauh kosong. Jumlah jemaah yang dikirim ke luar negeri IPB, yang lalu 3 orang, yang sekarang IPB 2 orang. Negeri jauh yang lalu kosong, sekarang 1 orang. Jumlah jemaah 40 hari masrot kosong. Jumlah jemaah 10 atau 15 hari masrot, yang lalu 1, sekarang 1 jemaah. Jumlah jemaah 3 hari masrot, yang lalu 4 jemaah, sekarang 5 jemaah. Jumlah jemaah 40 hari masrot keluar negeri kosong. Jumlah orang yang telah belajar khusus 2 bulan itu mungkin, yang lalu 3, sekarang 5. Jumlah desa di mana saja telah dimulai, yang lalu 2, sekarang 5. Jumlah pulau 10, sekarang 10. Jumlah pulau yang sudah dimasuki jemaah, yang lalu 2, sekarang 5. Nah, jadi berapa jauh ini dari Jakarta? Perbatasannya, apanya itu? Dari Jakarta. Banten itu 1 kilo. Bukan dari markas. Dari markas ke jadi berarti lemah sekali ini. Dia nanya profil. Ini di sini ada 12.000 masjid. Dari 14.000 tidak sampai 200 masjid ada kerja dakwah, ada amal makomi. Pak,
ulamanya ke sana itu. Dan sampaikan keadaan dengan detail pada jemaah yang akan dikirim. Nah, dan dijelaskan dengan detail pada jemaah yang akan dikirim supaya tahu betul keadaan dan tepat bentuk usahanya. Nah, sebab setiap tempat itu selalu ada perbedaan begitu. Bangka Belitung. Kartu dari Amal Dakwah Provinsi Bangka Belitung. Jumlah orang yang keluar 4 bulan 652, yang aktif 356. Jumlah orang yang telah keluar 40 hari 843, yang aktif 370. Ini yang sudah keluar itu separuhnya yang nggak aktif ini. Yang 4 bulan itu, yang 40 hari juga gitu. Yang sudah keluar ini, yang 4 bulan maupun 40 hari, separuhnya tidak aktif. Ya. Nah. Terus kenapa sampai seperti itu dan apa yang sudah dibuat? Kita sudah mengupayakan setiap dari markas, setiap halaqah membuat jamaah bayangan. Jadi semua kampung yang punya nisab dibuat jamaah bayangan, dan apabila sudah punya 2 jamaah cash, maka kita buat jum ini. Markas isi tersebut benar saja. Ini hancur di jamaah. Jadi mutahari dulu, orang mutahari dulu, harus sampai करके एक जमात बना देंगे. जब इसी हल्के में या किसी जगह में 2 जमात तैयार हो गई, हम जुड़ बनाकर उनको रवाना कर दिए. Ini untuk mendatangkan orang yang tidak aktif ini, apa yang dibuatnya di mana sebetulnya? Supaya usaha dalam amal ini. Selalu kita dalam musyawarah kita tekankan mereka untuk hisab lagi. Tapi upaya kita musyawarah ini हम तरकीब देते कि वो अपना सालाना सिलसिला देना चाहिए. Kami musyawarah itu ये कहा. Itu apa hadir di musyawarah? Kalau ditarik dalam musyawarah itu kan nggak ada dalam musyawarah. Ada musyawarah mingguan kita kan setiap dari alam-alam sudah datang, dan kita minta laporan dari taksil, melaporkan berapa jemaah akan dikeluarkan, ada berangkat bayangan ya. Itu gimana supaya mau ikut apa itu gimana itu yang ditanya. Nah ini kita perlu belajar. Ini Masya Allah, kita orang-orang di makom ini kita berikan juga. Tapi jangan sampai kita hanya mikir orang-orang di makom kita, tapi yang sudah pernah keluar malah kita biarkan. Ini kalau yang ditulis ini diteliti benar-benar apa kira-kira saja ini? Diambil semua benda teliti. Takik sih. Ini malam markas 1, itu sahabat 2 ini gimana ceritanya? Malam markas yang sudah disetujui Nizamuddin ada 1, dan kita ada 2 pulau, 1 pulau Bangka, 1 pulau Belitung. Dan di Pulau Bangka sudah ada Pulau Bugari dan Padang Sabah. Sedangkan di Belitung ya, mereka hanya buat Padang Sabah saja. Tidak ada program tingkat. Masya Allah. ये 2 जजीरे हैं. 2 जजीरे हैं. एक जजीरा में मार्कस और वो निजामुद्दीन से मुताबिक हो गया निजामुद्दीन में. और दूसरा जजीरा में उसमें मार्कस नहीं, लेकिन हैदराबाद ने शुरू कर दिया. हमसरा ने शुरू कर दिया. Dan terus itu dimulainya di mana? Kalau nggak ada markas, gimana mulainya malam Haidul Sahabat itu gimana? Mereka ada buat kumpul juga seperti Pak Dari, tapi mereka tidak ada program tingkat sekarang gitu. Nah, sebut dari desa lagi di tingkat naik tingkat. Itu musyawarah dengan surah nggak itu? Kemarin waktu kita musyawarah bulan April, dari Belitung minta izin mereka untuk buat malam membaca sahabat terus yang sekarang kita jalankan. April में हमने izin ले लिया.
Sudah sampai di sini dia. Ijazah itu negara. Disampaikan dari masyarakat kita bahwa apabila di tempat itu ada malam markas sesuai dengan syarat yang ditentukan, sudah diputuskan, kemudian di sana ada ulama-ulama juga yang sesuai dengan syarat yang ditentukan, maka disitulah bisa keluar setahun dan sebagainya, maka disitulah bisa diadakan pembahasan hadis sahabat di markas yang ada sabguzarinya itu. Dan tanpa izin dari Nizamuddin tidak ada malam markas manapun di seluruh dunia. Dan apabila ada amal-amal yang kita lakukan tanpa sesuai dengan arahan orang tua kita, tidak ada keberkahan, tidak ada peningkatan, bahkan akan mendatangkan kerugian. Orang yang tidak ikut arahan musyawarah akan terjerat dalam tipuan setan. Jadi untuk masa yang akan datang jangan sampai diteruskan, dan di malam yang ada satu jari itu saja yang dibacakan hadis sahabat. Ini untuk semuanya ini. Jumlah ulama yang keluar 1 tahun 6 orang, yang aktif 5 orang. Jumlah ulama yang telah keluar 4 bulan 14, yang aktif 10. Jumlah ulama yang telah keluar 40 hari 6 orang, yang aktif 3 orang. Jumlah tempat Sabguzari 1, jumlah tempat yang ada talim dan sahabat 2. Jumlah masrot yang telah keluar 40 hari 13. Jumlah masrot telah keluar 50 hari 15 hari 116 pasang. Jumlah tempat talim masrot mingguan 39. Jumlah masrot yang keluar dengan tertib 3 hari 112 pasang, 40 hari 2 pasang. Jumlah desa kelurahan 363. Jumlah malako 53. Jumlah masjid musola 1653. Jumlah masjid hidup 5 amal sempurna, yang lalu 72, sekarang 46. Jumlah masjid hidup kurang dari 5 amal, yang lalu 317, sekarang 332. Jumlah jamaah 3 hari rata-rata setiap bulan, yang lalu 128, sekarang 96. Jumlah orang yang mengerjakan 2,5 jam setiap hari, yang lalu 510, sekarang 435. Jumlah masjid yang menghidupkan usaha membangunkan masjid, yang lalu 29, sekarang 21. Jumlah rumah hidup taklim harian, yang lalu 601, yang sekarang 600. Jumlah rumah hidup taklim harian dengan muzakarah 6 sifat, yang lalu 367, sekarang 404. Jumlah orang yang keluar 4 bulan setiap tahun, yang lalu 31, sekarang 34. Jumlah orang yang keluar 10 hari setiap bulan 1 orang, yang sekarang 1 orang. Jumlah seluruh jamaah 4 bulan, yang lalu 2 orang, sekarang 6 jamaah. Jumlah jamaah 4 bulan jalan kaki, yang lalu 2 jamaah, sekarang 5 jamaah. Jumlah seluruh jamaah 40 hari, yang lalu 24 jamaah tambah 7 orang, sekarang 31 jamaah. Jumlah masjid yang mengeluarkan jamaah 4 bulan sempurna, 4 bulan 4 hari dalam negeri, sekarang 1 jamaah. Jumlah jamaah yang dikirim ke luar negeri, yang lalu satu orang. Jumlah masrat 40 hari, sekarang 1 pasang. Jumlah masrat 10 hari 15 hari masrat. Jumlah jamaah 10 hari 15 hari masrat, yang lalu 3 jamaah, sekarang 8 jamaah. Jumlah jamaah 3 hari masrat, yang lalu 48 jamaah, sekarang 77 jamaah. Jumlah orang yang telah belajar tertib Nizamuddin, yang lalu 2, sekarang 2.
Jumlah desa di mana kerja dimulai yang lalu 101 terhadap kosong. Jumlah pulau 470. Jumlah pulau yang dimaksud jamaah yang lalu 24 sekarang 25. Kalau mau berangkatkan jamaah Mahsurat, ada bayan hidayahnya? Berapa lama bayan hidayah Mahsurat itu? Saya awal kurang paham kalau yang bayan hidayahnya, tapi biasanya dibuat sampai 2 jam. Dua kan deh. Mungkin sejam. Asal wudhu kan deh. Jadi paling 20 menit. Sejam orang jam mereka kelamaan. Berikutnya mana? Jawa Barat. Sargojari Amanggawa, Provinsi Jawa Barat. Jumlah orang yang telah keluar 4 bulan 4.360. Yang jumlah yang aktif 2.712. Jumlah orang yang telah keluar 4 hari saja ini juga sama ini, separuh lebih, bukan separuh lebih tidak aktif. Terus apa yang jadi buat apa? Iya. Kita galakkan untuk kunjungan pada dai dengan 2,5 jam dan juga 2 kadang-kadang juga 2,5 jam ekstra. Sehingga kami akan tidak dikatakan orang kami lagi itu sudah sih harus dibicarakan. Ini karena mereka belum mau aktif ini, ada nggak yang sampai nangis, memikirkan doa pada Allah sampai dengan tangisan betul-betul, ada nggak yang begitu? Lihat kalau orang hari ini rugi urusan dunianya, bagaimana dia tidak bisa tenang? Nah, dia tidak akan bisa duduk dengan tenang. Ini separuh lebih dari modal kita hilang. Apa yang dipikirkan dengan hilangnya modal ini? Terus jumlah ulama yang telah keluar 1 tahun 57 orang. Jumlah yang aktif 51. Jumlah ulama yang telah keluar 4 bulan 173 orang. Jumlah yang aktif 116 orang. Jumlah ulama yang telah keluar 40 hari 170 orang. Jumlah yang aktif 112 orang. Jumlah tempat tabligh berjari 15 masjid. Jumlah tempat yang ada taklim hayatus sahabah 15. Jumlah masjid yang telah keluar 40 hari 211 pasang. Jumlah masjid yang telah keluar 10 atau 15 hari 901 pasang. Jumlah tempat taklim masjid mingguan 431. Jumlah masjid yang telah keluar dengan tertib 3 hari 3082 pasang. Yang 40 hari 67 pasang. Jumlah desa kelurah atau kelurahan 5.214. Jumlah halaqah 263. Jumlah masjid dan mushola 158.958.
Jumlah masjid hidup 5 amal sempurna. Yang lalu 335, sekarang 344. Jumlah masjid hidup kurang dari 5 amal 2.833, sekarang 2.889. Ini juga kurang lebih sama. Jadi 3.200-an kurang lebih yang ada amal. Sementara 158.000 lebih jumlah masjidnya. Jadi yang belum ada amal masih 155.000 kurang lebih itu tidak ada amal. Usaha yang telah dibuat ada 12 kerja ekstra, kemudian menyebarkan rombongan-rombongan target seluruh Jawa Barat oleh 4 bulan dan 40 hari. Sudah dibuat rute seperti jaringan atas utara, selatan, timur, barat, disebarkan hampir setiap tahun mungkin rata-rata sekitar 100 sampai 200 rombongan ke Jawa Barat. Je sais que c'est orbi ça हम ऐसा रूप बनाते कि ये जान की तरह और हम हर साल तकरीबन हर साल तकरीबन 120 जमातें हम निकालते हैं जिले की और चरमोनी की. Ya bang, jemaah banyak dikeluarkan dari mana peningkatannya itu? Hampir nggak ada peningkatan, nggak hidup-hidup. Dan jemaah dikirimkan kan untuk menunjukkan usaha. Maka tahu coba semuanya tahu coba. Maka hendaknya jamaah yang akan diberangkat diberikan banyak hidayah sempurna bagaimana menghidupkan amal dakwah di tiap-tiap masjid, dan nantinya setelah mereka pulang kita mintakan juga dengan detail supaya ada tindak lanjut yang baik. Kalau seandainya jamaah 40 hari itu hanya menghidupkan 2 saja misalnya, itu sudah berapa itu tambahannya kalau tadi 120 meter setahun itu. Nah, terus jumlah jemaah 3 hari rata-rata setiap bulan. Yang lalu 814, yang sekarang 876. Jumlah orang yang mengerjakan usaha 2,5 jam setiap hari. Yang lalu 4.091 masjid orang. Yang sekarang 4.292 orang. Apalagi jumlah jamaah 3 hari cukup banyak ini. Kalau ini berhasil menghidupkan masjid-masjid, mestinya peningkatannya juga pesat ini. Jumlah masjid yang hidup UMM atau usaha memakmurkan masjid. Yang lalu 157 masjid, sekarang 208 masjid. Jumlah rumah hidup taklim harian. Yang lalu 4.647, yang sekarang 4.711. Jumlah rumah hidup taklim harian dengan muzakarah 6 sifat. Yang lalu 2.514, sekarang 2.583. Jumlah orang yang keluar 4 bulan setiap tahun. Yang lalu 354 orang. Sekarang 359 orang. Jumlah orang yang keluar 10 hari setiap bulan. Yang lalu 125 orang. Sekarang 131 orang. Jumlah orang yang mengeluarkan 8 jam setiap hari. Yang lalu 142.
sekarang 153 orang. Jumlah seluruh jemaah 4 bulan yang lalu 45 jemaah, yang sekarang 22 jemaah. Jumlah jemaah 4 bulan yang kaki yang lalu 13 jemaah, yang sekarang 7 jemaah. Jumlah seluruh jemaah 40 hari yang lalu 197 jemaah, sekarang 155 jemaah. Jumlah jemaah 40 hari jalan kaki yang lalu 9 jemaah, yang sekarang 6 jemaah. Jumlah masjid yang mengeluarkan jemaah sempurna 4 bulan atau 40 hari dalam negeri yang lalu 4 bulan 3 jemaah, 3 masjid. Yang 40 hari 8 masjid. Yang periode ini yang 4 bulan 3 masjid, yang 40 hari 27 masjid. Jumlah masjid yang mengeluarkan jemaah sempurna 4 bulan negeri jauh kosong, sekarang kosong. Jumlah jemaah yang dikirim ke luar negeri ke IPB 10 jemaah yang lalu, negeri jauh 2 jemaah. Yang sekarang 8 jemaah, negeri jauh, IPB 8 jemaah, negeri jauh 3 jemaah. Jumlah jemaah 40 hari maskurat yang lalu 5 jemaah, sekarang 4 jemaah. Jumlah jemaah 10 atau 15 hari maskurat yang lalu 52 jemaah, yang sekarang 37 jemaah. Jumlah jemaah 3 hari maskurat yang lalu 209 jemaah, yang sekarang 199 jemaah. Jumlah jemaah 40 hari maskurat ke luar negeri, IPB 3 jemaah, negeri jauh 0 jemaah yang lalu. Sekarang IPB 3 pasang, negeri jauh 0. Jumlah orang yang telah belajar tertib 2 bulan di Nizamuddin yang lalu 51 orang, yang sekarang 53 orang. Jumlah desa di mana kerja telah dimulai yang lalu 1518 desa, yang sekarang 1551 desa. Jumlah pulau tidak punya 000. Jawa Tengah. Baru dari Amal Dakwah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah orang yang telah keluar 4 bulan 4.580. Yang aktif 2.636. Jumlah orang yang telah keluar 40 hari saja 5.303. Yang aktif 1.883. Jumlah ulama yang telah keluar 1 tahun 146. Jumlah yang aktif 111. Jumlah ulama yang telah keluar 4 bulan 175. Jumlah yang aktif 80. Jumlah ulama yang telah keluar 40 hari 148. Jumlah yang aktif 53. Jumlah tempat sabguzari 9. Jumlah tempat yang ada taklim hayatul sahabat 9. Jumlah masturat yang telah keluar 40 hari 148. Jumlah maskurat yang telah keluar 10 atau 15 hari 842. Jumlah tempat taklim maskurat mingguan 171 rumah. Jumlah maskurat yang keluar dengan tertib 3 hari 927, 40 hari 37 pasang. Jumlah desa ataupun kelurahan 8.585. Jumlah halaqah 273. Jumlah masjid dan musola 132.976. Jumlah masjid hidup 5 amal sempurna lalu 233, kini 233. Jumlah masjid hidup kurang dari 5 amal lalu 3.634, kini 3.634. Jumlah jamaah 3 hari rata-rata setiap bulan
lalu 646 kini 652. Jumlah orang yang mengerjakan usaha 2,5 jam setiap hari, lalu 3.119 kini 3.119. Jumlah masjid yang hidup usaha memakmurkan masjid, lalu 156 kini 156. Jumlah rumah hidup taklim harian, lalu 4.738 kini 4.463. Jumlah rumah hidup taklim harian dengan mudzakarah 6 sifat, lalu 2.489 kini 2.489. Jumlah orang yang keluar 4 bulan setiap tahun, lalu 378 kini 151. Jumlah orang yang keluar 10 hari setiap bulan, lalu 33 kini 33. Jumlah orang yang meluangkan waktu 8 jam setiap hari, lalu 54 kini 54. Jumlah seluruh jamaah 4 bulan, lalu 36 kini 30. Jumlah jamaah 4 bulan jalan kaki, lalu 5 saat ini 2. Jumlah seluruh jemaah 40 hari, lalu 84 jemaah, kini 104 jemaah. Jumlah jemaah 40 hari jalan kaki, lalu 5 jemaah, kini 11 jemaah. Jumlah masjid yang mengeluarkan jemaah sempurna 4 bulan 40 hari dalam negeri, lalu 4 bulan kosong 40 hari 3 masjid, kini 4 bulan kosong 40 hari kosong. Jumlah masjid yang mengeluarkan jemaah sempurna 4 bulan negara jauh, lalu IPB 1 jemaah negeri jauh kosong, kini IPB kosong negeri jauh kosong. Jumlah jemaah yang dikirim ke luar negeri, lalu IPB 1 jemaah negeri jauh kosong, kini IPB kosong negeri jauh kosong. Jumlah jemaah 40 hari maksurat, lalu 1 jemaah, kini 1 jemaah. Jumlah jemaah 10 atau 15 hari maksurat, lalu 25 jemaah, kini 11 jemaah. Jumlah jemaah 3 hari maksurat, lalu 101 jemaah, kini 82 jemaah. Jumlah jemaah 40 hari maksurat ke luar negeri, lalu IPB 3 jemaah, sekarang IPB 1 pasang. Jumlah orang yang telah belajar tertib 2 bulan di Nizamuddin, lalu 49 orang, kini 54 orang. Jumlah desa di mana kerja telah dimulai, lalu 156 desa, kini 265 desa. Jumlah pulau 29 pulau, kini 29 pulau. Jumlah pulau yang sudah dimasuki jemaah 7 pulau, kini 7 pulau. Kalimantan Barat sudah datang belum yang bawa data? Pak, angkat tangan Kalimantan Barat. Pak, angkat tangan Kalimantan Barat. Kalimantan Barat nggak ada yang hadir? Pak, angkat tangan Pak. Yang bawa data sudah datang belum? Nanti habis maghrib, insyaallah.